setup ବୁଝାହବ। Morning session, we have discussed what is introduction to payment of bonus act 1965. Then what are the scope and coverage of payment of bonus act 1965, employee eligibility, minimum bonus, maximum bonus. Apart from this, we have completed the time limit of bonus, time limit to payment of bonus, mode of payment of bonus. Then apart from this, deduction punishable. Then how to calculate the payment of bonus, means how the base selling is 700 already I told you. Basing this we can calculate bonus. Last thing is that is the set on setup. What do you mean by this? What I told you in the morning session? Porema. Yes, ma'am. आपण कहले जे हमरो पर माने 30 डेज माने जदी वर्क करथिबे ताले सेमानकर बोनस कैलकुलेट होबो 30 डेज पर जदी सेमाने 15 डेज वर्क करथिबे ताले कोन सेमानकर 15 डेज वर्क माने सेमानकर बेसिक सैलरी सेथरे कैलकुलेट होबो कि बोनस ना सेटा नागु मिलेबोनी ना टोटली मिलेबोनी सेमाने टोटली एलिजिबल ही हेबेन हैला ओके in a accounting year preceding 12 months, a person have to work in a particular establishment minimum 30 working days. Minimum. It must be more than 30 working days can be possible, but if less than 30 working days person worked in that particular establishment, the person is not eligible for bonus. Okay? The person is not eligible for bonus. Suppose, as per your question, my answer is that if the person is in the last preceding one accounting year, so if the person worked in that particular organization, it may be 15 days, 20 days, up to 29 days, it is not eligible. The person may not be eligible. After 31 days, 30 days, minimum 30 days and more than 30 days, then the person is eligible for the payment of bonus. That is the first criteria. Second criteria, that is the person who is getting up to 21,000 per month. It is on the basis of basic and DA. That is the second criteria. Third criteria, the person basically what? The base selling is 700. Means the calculation of bonus is 700. If means the person is getting less than 7,000, then the exact figure in the calculation period, the exact figure we can take there. But if more than 7,000 the person is getting, then we can take the only 7,000 as a calculation amount. ठीक है 7,000 रु अधिक होला माने हम 7,000 सेटा गुटे माने हमर बाउंड्री अछि हैला आउ जदी 7,000 रु कम हैला हैला ताहा हैला हम सही एग्जैक्ट फिगर हम कैलकुलेशन करि परिबा मु सकाले कहितली 30 दिन रु कम हैला हबनी एलिजिबल नै कटि गलो टोटली तमे यू आर नॉट एलिजिबल 21,000 रु अधिक अछि बेसिक डे यू आर नॉट एलिजिबल ए सब क्राइटेरिया ऑलरेडी मु कहि देछि यस ना पिला माने yes माने Yes, ma'am. Next what is am I audible properly, clearly? Ma'am, clearly audible. Yes, ma'am. Yes, sir. अरे पिला माने क्वाड पळेलो ना मैम आपन को साउंड अच्छी मैडम सुबह जाउची तो अरे सुबह नहीं सुबह जाउची तो यस मैम ऑडिबल कॉल आसुला तो टिके ब्रेक होती पर क्लियर होती ओके चलो तापर मैं कोन पढे कहली तो मैं कहबी सेट ऑन सेटअप नाउ व्हाट डू यू मीन बाय तेरी व्हाट डू यू मीन बाय सेटअप चल सुना मु कोन कहूची ध्यान पूर्वक सुनिबो कोन ध्यान पूर्वक सुनिबो सी इफ इन ए वन अकाउंटिंग ईयर द allocable surplus माने जोटा हमर सरप्लस आसिला हमें बोनस ता कोथरु दबा सरप्लस रु दबा हैला प्रॉफिट रु दबा सरप्लस रु दबा हैला if in a one accounting year the allocable surplus exceed the amount of maximum bonus, then such excess shall be carried forwarded for the coming 4 years. What do you mean by this? See, minimum bonus is 8.33,
maximum bonus is 20%. If the organization making profit, then we can provide maximum 20%. If the organization facing losses, then also we can provide minimum 8.33% of bonus to the worker. While the organization will complete after completion of the 5 year of the new establishment. The certain set of formula, it can be applicable after 6 years. Already I told you. See, suppose the good example ko sundar bhabare man rakhi. Suppose amara allocable surplus hala 5 lakhs. Kete 5 lakh tanga. Hela amara allocable surplus mane amar profit hechi 5 lakh mane profit hechi organization ra. So ame kete percent bonus daba mu kon कहली if the more profit more bonus, less profit less bonus, ठीक है. So 5 lakh जो हमर allocable surplus आसला आमे bonus maximum 20% लोकन को देई देले दे हमर bonus हमर केते खर्च होला 3 लाख टका खर्च होला बलिला केते बलिला 5 लाख रु 3 लाख bonus देले बलिला केते बलिला 2 lakhs बलिला. से 2 lakhs हमें कौन करिबा ना से 2 lakhs हमें कैरी फॉरवर्ड कर दबा केते वर्ष पई 4 वर्ष पई माने एडी मु गोटे पॉज मारछि 4 वर्ष पई माने सेटा 4 वर्ष पई फिक्स डिपॉजिट कर दबनी सेमिति नुवा हैला सेही अमाउंट कोन हबो तमरो कैरी फॉरवर्ड हेई जाउथबो कमिंग सक्सेडिंग 4 ईयर पर्यंत. धर कमिंग ईयर रे कोन हैला तमरो 2 लाख अछि हैला एटा गुटे आरो पूरा जेतेले तमे पेरेंट बुक को जिवो हैला जो बुक्स को जीवो पीएल मल्लिक जो सब जते सब बुक्स लेखिछथि लेवल ला ऊपर तार लास्ट पेज रे गुटे एनेक्स्चर देछि सेतरे सेटन सेटअप रो गुटे पूरा 10 वर्ष रा कैलकुलेशन देछि मु एडी कैलकुलेशन ता करथांती किंतु हम पाखे सेतरा टाइम नै मु सेत पई कहि दोछि कैलकुलेशन करूनी पूरा कैलकुलेशन मु त मु करि रेडी मु देखै तान हैला. सो से जो 2 लाख हमें 4 वर्ष पई कैरी फॉरवर्ड करले धर कमिंग ईयर रे कोन हैला ऑर्गेनाइजेशन कोन कला मैम समझ आ रहे हैं मैम किसी सुबिला Ma'am, you are not audible. सुना सुबा गलानी अच्छा आई एम नॉट ऑडिबल ओके नाउ इज इट ऑडिबल छुआरे Yes, पिला sir. माने सब भूल इंटरनेट रे सब हां ओके फाइन सुना तो मु कोन कहली से 2 लाख टा अछि 2 लाख अछि हैला कमिंग ईयर को कोन कला अगेन कंपनी प्रॉफिट कला 6 लाख हैला 6 लाख से प्रॉफिट कला हमें मैक्सिमम बोनस केते देबा 20% हमें 20% मैक्सिमम दे के हमें केते देई परछे केते दोचे 3 lakhs. हां 3 लाख वेरी गुड बॉय हैला मैक्सिमम हमें 3 लाख देले ता माने हमर एडी बलिला केते बोलला 3 लाख 3 लाख बोलिला 2 लाख केमती बोलिला 3 लाख बोलिला ना हां 3 लाख सरला माने 3 लाख बोलिला हैला. सो जो ए जो बोलिला आर वर्ष रो 2 लाख ए वर्ष रो 3 लाख ता माने जे 2 लाख टा भी कैरी फॉरवर्ड हैला से 3 लाख भी कैरी फॉरवर्ड हैला कोन हैला ए 2 लाख कोन हैला ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 4 वर्ष पर्यंत तमे खाली प्रॉफिट करी करी चालिलो हैला ए 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हेई चालिला 4 वर्ष परे आफ्टर 4 ईयर दिस 2 lakhs it can be lapse बुझिलो ना बुझिलोनी 4 वर्ष परे 4 वर्ष जो वर्ष सरी गला तमरा नेक्स्ट ईयर बोल को ए 2 लाख टंका लैप्स कर जिवो लैप्स काई करिवो लैप्स को कोड गला 2 लाख कोड गला 2 lakh में समान तक एम्प्लॉय नहीं गला ना रे बापा एडी 2 लाख एम्प्लॉय नहीं गला रे हैला सेटा दो बिन बोनस पाई बोले आ यूज हैला ने बाबू सेइते पाई सेई 2 लाख एम्प्लॉयर ताको नहीं गला जे एमिति तमर कैरी फॉरवर्ड अमाउंट आको 4 वर्ष ही गला परे एम्प्लॉयर कोन करथबो सेटा लैप्स कर दोथबो ताको हमें कोन कहिले सेटन बुझी गलो सेटन काहा को कहिले दिस इज कॉल्ड सेटन हैला. नाउ कम टू द पॉइंट सेट ऑफ अच्छा तमर कोन हैला मैडम गुड क्वेश्चन ना प्लीज जदि मैडम ताको एम्प्लॉयर नबार ही थिला ताको पुनी 4 वर्ष काई माने रखिला तार कि रीजन कोन अछि नहीं करी मु आसुची सही पॉइंट को आसुची हैला मु तम पॉइंट को ना आसुची कोन हैला अच्छा धर तमे कोन कलो आर वर्ष 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हेतिला हैला ए वर्ष कंपनी कोन कला कंपनी फेसिंग हेवी लॉसेस राइट मींस द allocable surplus it may be 0
completely nil. ठीक है? Now how we can provide bonus? आमे bonus केमती provide करिबा? Now we can provide bonus. काहे कि सेटा गवर्नमेंट कहला कैरी फॉरवर्ड 4 वर्ष पर्यंत करिवो ना गोटे अमाउंट एटलीस्ट हमर सरप्लस है कि बोनस पई बोली माने थाउ ऑर्गेनाइजेशन रे एनी टाइम कंपनी may not be making profit or may be facing heavy losses. Due to heavy losses the company unable to pay bonus, but though your organization completed 6 years, so you are compulsory, you have to pay bonus. तमे तो बोनस न देगी रही परिबनी बाकी तमर तो कंपनी लॉस फेस करची तमे कोन कलो कंपनी रो से जो देबो केमती तमर तो हेवी लॉसेस सेहित पई तमे कोन कलो जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट ता को तमे कोन करिवो यू कैन यूटिलाइज एज ए बोनस एटा पूरा म कैलकुलेशन त मु सिकै दिथांते हम पाके टोटल टाइम रे मु जा कुछ से आंसर सुन दियो हला बही को जीवो पेरेंट बुक को जीवो से देखिबो न बुझले पचारि हला सो सेही अमाउंट को हमें यूज करिबा एज ए बोनस दैट कैरी फॉरवर्ड अमाउंट वी कैन यूटिलाइज एज ए बोनस हला सेहित पई ताको सेट ऑन कहा गला अच्छा मैम 4 इयर भितरे 4 इयर भितरे जदी लॉस हला ताले माने से जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट को 4 इयर भितरे मैनेज कर हाँ that carry forward amount we can utilize within the 4 year any time as related to bonus जदी हम यूटिलाइज न कले मा बाबू रे जदी हम यूटिलाइज न करि पाले मु कोन कहली कंपनी ओनली मेकिंग प्रॉफिट खाली पैसा खाली ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट हला ता माने हम से कैरी फॉरवर्ड अमाउंट को यूटिलाइज करि पालेनी ता माने सेटा आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर बळको लॉसेस हबो माने सेटा तमरा नील हे जिवो बाकी तुम जब कंपनी लॉस फेस करूची से जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट को अप टू 4 इयर भितरे 4 वर्ष भितरे यू कैन यूटिलाइज एज ए बोनस दैट्स व्हाई द कैरी फॉरवर्ड अमाउंट सेटा रहिबा निहाती दरकार 4 वर्ष भितरे एम्प्लॉयर ताको छुई परिबो नाही दिस इज कॉल्ड सेट ऑन क्लियर this it is compulsory ma'am it is compulsory as per the Indian constitution that is there in the bonus act 1965 आमे किछि एथिरे चेंज करि परिबा नै इट इज कंपल्सरी बुझी गलो अच्छा मैम सेकंड ईयर रे जो 3 लाख तारा फायदा हला सेटा कोन करिए हां सेटा मैडम कोन करिवो हां सेटा पुनी 4 वर्ष पर्यंत करि फॉरवर्ड सेटा मैडम सेटा पुनी 4 वर्ष पर्यंत करि फॉरवर्ड हे चलिवो थर्ड वर्ष रे अमाउंट पुनी 4 वर्ष पर्यंत करि फॉरवर्ड हे चलिवो तो ये जो पुराना आगो लाभ से ही जाउथबो नुआ आगो कैरी फॉरवर्ड हे जाउथबो पुराना आगो लाभ से ही जाउथबो नुआ आगो सब टर्म कंडीशन समान बुझिलो ना 4 वर्ष जी होतला सेटा सेटे लाभ कर दोथबो नुआ आस्तला सेटा ऐड होथबो एटा को कहा गला सेट ऑन क्लियर आ किछि मन रे डाउट अछि कहार किछि क्लियर वेरी गुड नाउ सेटअप को हम आसीबा सेटअप फार्मूला कोन धरो मु जहा कोछि सुनिबो भलो से आ किछि मन रे क्वेश्चन आसीबो मते पचारि पारि आगे सुनि दियो सेटअप हला एट द ईयर ऑफ वो देखिलो के सेट नेक देखिबो ओ पचाले कहि देबो मु परे कथा आबि जा मोला रे देखि दियो हां हेलो हां सुनंतो ए घरे क्लास ने ले या प्रॉब्लम हला कोन ना धरो 5 वर्ष परे 6 इयर्स रे हला माने 6 इयर्स रो सेटअप रे मु कहूनी 6 इयर रो तमरो बोनस एबे लागू हला सही वर्ष न 5 वर्ष तमरो सेटअप हला कैरी फॉरवर्ड हे गला सब हे गला 6 वर्ष बळो को कोन हला कंपनी कोन हला बो काटी दियो परे मु देखुची हला 6 इयर्स रे कोन हला कि कंपनी हेवी लॉस कला हला जेते हेवी लॉस कला कंपनी the carry forward amount also not there कौन सी कैरी फॉरवर्ड अमाउंट नहीं सब कैरी फॉरवर्ड अमाउंट इधर लाभ से ही जाइछि और कैरी फॉरवर्ड अमाउंट सब यूटिलाइज हो जाइछि इधर यूटिलाइज हो जाइछि और लाभ से ही जाइछि कैरी फॉरवर्ड अमाउंट किछि भी नहीं कंपनी कौन कला हेवी लॉस कला due to heavy losses there is no allocable surplus and the company basically unable to pay bonus clear now कौन होबो एठी कंपनी बोनस दबना दबनी यस मो कहिछि तुमको वंस एटा हला बोनस ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड एमान ले गोटे सन्नी दशा काहा को एम्प्लॉयर को वर्कर को ना एम्प्लॉयर को वंस सन्नी पाख पछरे लागि गले माने सीए पूरा लागिले फॉर एवर एंड एवर जो पर्यंत तमे कंपनी क्लोज डाउन करिनो गला
तबे कहबो कमेंट को एठी लिखिकी दबो कि मोर बहुत लॉस हला आज्ञा मते कि टिके क्षमा करंतु ए वर्ष मो बोनस दे परिबिनी मते टिके दया करंतु कमेंट कहबो जदी दे परिबनु तू भी ऑपरेट करिया भी दरकार नै ताला पका घर को पळा केही सुनिबेनी तम कथा एठी हैला तमे तो दबो केमिति दबो तम पाखे तो पैसा नाही तमे कोन करिवो एना से पैसा जो देती कि तमे तो 20% दे परिबनी 3 लाख से दे परिबनी 20% केते दबो मिनिमम दबो थोर मिनिमम बोनस ता केते धर जदि 20% हला 3 लाख मो एग्जांपल देठी नैची 20% जदि हला 3 लाख आमे मिनिमम ता आमे गोटे लाख टंका नबा 1 लाख हमक दरकार 1 लाख कोडु आनिबा 1 लाख आमे फ्रेंड पाखरु धार करिबा बापा मा पाखरु धार करिबा बैंक रु धार करिबा घर ऊपर को टंका आनिबा गाड़ी ऊपर को टंका आनिबा जो ऊपर को टंका आनिबा हैला बाकी आमे बोनस दबा बुझिलो ए जो टंका आनिलो ओनर मैम धार कर्ज करिकि भी माने बोनस पे करिवो हां दबो धार करो करज करो जहा करूच करो जो रखिथिलो आगुरु से पैसा रु काडी की दियो तम पाखरे पैसा नै सांगडु आनी की दियो जहा दउचो दियो बाकी बोनस दियो हैला आनी की देलो केते देलो मिनिमम 8.33 लाख टका दे देलो बोनस ता माने तमे एई जो लाख टका आनी की देलो हैला सेटा को तमे कोन करलो कमिंग ईयर रे कोन हैला लाख टका अछि तमे धार करेज करछो you borrowed money it may be through bank it may be through your friend circle it may be through your family member it may be whatever may be the reason but your means what this much is your amount you borrowed this much of amount ठीक है now you have to repay that amount जो तुम धार करेज करलो तुम से पैसा दबन से तुम छाड़िबो ते जियो जो ना कहीं छाड़िबो तुम ताको रिपे करिवो अच्छा कमिंग ईयर रे कोन हैला कमिंग ईयर रे कोन हैला तमरो प्रॉफिट नो लॉस हैला कोन हैला सब अलोकेबल सरप्लस है कि 10,000 टका तमरो प्रॉफिट हैला तले 10,000 टका प्रॉफिट हैला तुम मिनिमम बोनस केते दबो 8.33 और लाख टका बाकी अछि सेटा भूली न थो हैला 10,000 टका लाभ कल अच्छा तुम बोनस केते दबो मिनिमम 8.33 लाख टका दबो धार केते आनिबो 90,000 टका आनिबो हैला नाओ 90,000 टका आनिलो सेकंड ईयर रे 2 लाख टका बोनस देलो गला ता माने तमे 6 धरो 6 ईयर 1 लाख 7 ईयर 90,000 तमे ऑलरेडी तमे सेट ऑफ तमरो हेकिरी तमरो माने बोरोड मनी अछि हैला कोन हैला नाउ तमे कोन करबो थर्ड ईयर रे तमरो अलोकेबल सरप्लस केते आसला ना 2 लाख 2 लाख टका एडी अलोकेबल सरप्लस 3 लाख टका आसला अलोकेबल सरप्लस कि धर 2 लाख टका आसला अलोकेबल सरप्लस केबे थर्ड ईयर रे फर्स्ट ईयर रे तमे ऑलरेडी केते लॉस करछो लाख टका सेकंड ईयर रे केते करछो 90,000 थर्ड ईयर रे लाभ केते कला ना 2 लाख टका नाओ एडी कोन करिवे एडी बाटाबाटी हेबे एम्प्लॉयर आ वर्कर भितरे कोन बाटाबाटी डिस्प्यूट हबो ना वर्कर कहबे जो दो हमें 2 वर्ष हला हमें बहुत मिनिमम बोनस पाउच 8.33 दो दिस ईयर कंपनी मेकिंग मोर प्रॉफिट एंड अलोकेबल सरप्लस इज वेरी हाई सो यू हैव टू पे 20% एज ए बोनस अरे कंपनी कोड दबो 20% बोनस ए धार करेज ऑलरेडी पड़ी के अछि हैला एडी कंपनी कोन करिवो ना फर्स्ट ईयर रो जो लाख टका आनथिला हैला से लाख टका ता फास्ट सुजिबो हैला आउ जो लाख टका बोलिला से लाख टका कोन करिवो दबो एज ए बोनस ताको कोन को हागला ए जो एंटायर प्रोसीड्यूर को सेट ऑफ पुनी फोर्थ ईयर रे कोन हैला 90,000 थिला गोटे हां असली से पॉइंट को 90,000 थिला फोर्थ ईयर रे तमरो केते लाभ होला 3 लाख टका लाभ होला अलोकेबल सरप्लस के 3 लाख फोर्थ ईयर रे कोन करिवो आगे 90,000 टका सुजिबो हैला बोलिला केते 2 लाख जदी तमरो एलिजिबल होची अप टू 15% दे परियो कि 18% दे परियो बुझिला आगे सुजिबो पछे जा बोलिला ताको कंटीन्यूअस लॉस हला तापरे कंपनी ताला पके दी घर पळेबो आ कोन करबा तो किछि प्राय सब कंपनी कंटीन्यूअस लॉस करछि ना सेमंता सुन एई ना मु कहिछि एई ना मु टोटली 1000 थरो कहिसा लेनी कोन कहिछि रे ना एई पैंडेमिक सिचुएशन रे मु कोन कहिछि रे दिस इज कंप्लीटली एक्सेप्शनल केस this case it is not applicable in any type of it may be bonus gratuity provident fund एको तमे ना भूली जो एई एक्सेप्शनल केस आगु हमें आ भितरे भर्ती बानी
हैला आमे एटा कहूचे इन ए जनरल केस सब दिन आज को 100 वर्ष पर ही ना हमर एक्सेप्शनल केस आसला 100 वर्ष हमर एमती थिला कि आमे तो नॉर्मल लाइफ सब लीड करथुले ना सेही टाइप रो सेही टाइम रे एई सिचुएशन रा एई सब एक्सेप्टेड बट नाउ गवर्नमेंट मींस दैट अनसर्टेनिटी हां रे बाबू मींस टोमेटा होचे अनसर्टेनिटी केस थिला जिनसे सुनो एटा ए जो मु तुमको कहली इन सपोज इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन सो दिस इज कंप्लीटली एक्सेप्शनल केस सो इन दिस केस द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन दे विल डिसाइड व्हाट द स्टेप दे विल टेक दिस इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एडी अछि पूरा गवर्नमेंट बससी हां एम्प्लॉयर रो भी दुख सुनिबो ट्रेड यूनियन रो भी दुख सुनिबो वर्कर भी दुख सुनिबो जदी दुई जन म्यूचुअली फाइनल हे गेला वेल एंड गुड नहले गवर्नमेंट अछि समान को सेटल करिया पे सेमाने दुई जनकर भलो जोडा हबो सेटा करि परिबो कारण एम्प्लॉयर भी ना कांदुची बसिकी एना तमे कहबो कि हमर बॉस जते अछंती कंडक्टर हेल्पर कहबिया कि मते पैसा दे ड्राइवर कहबो मते पैसा दे मालिक कहूची अरे मो पैसा कोडू देबी मते नै कि मते खाइ जा मो कोडू आनिबी पैसा चालिले तो तम मानु को देबी तुमर अवस्था जहा एना मो अवस्था सेया तार गुटे कोन मझी बाट बाहर करबा सेटा कि गवर्नमेंट बाहर करबो मैडम कोन करे हां कोंतु in third year, if the allocable surplus will be around say more than 1,90,000 adjust take भी bonus दिया जाई पारे ताले 2 वर्ष रो से एडजस्ट करिबो कि हाँ 2 वर्ष रो नहीं एक्चुअली कोन हबो सेठी सर जदी आपण 2 वर्ष रो सेठी एडजस्ट कर देबे सर ताहा हेले आपण को अगेन माने पैसा थार खर्च करिया पड़िबो सेठी पे से सेटन सटे फार्मूला कहूची आगे बोनस पैसा रखी गिरी माने हमें मिनिमम जेति की धर मिनिमम बोनस टा हमें रखिबा हातरे हैला मिनिमम बोनस टा केते सर लाख टंका हाथ रखी गिरी बाकी रेस्ट अमाउंट जहा हला हमें फास्ट प्रथमे फर्स्ट ईयर सु जिबा देन सेकंड ईयर 10,000 हो 5,000 हो 15,000 हो 90,000 न हो 5,000 भी ही पारो कहले आगे लाख टंका आगे लाख टंका बोनस रखि देले मिनिमम बोनस तापर हमरो धरंतु बोलेला 1,10,000 आमे फर्स्ट ईयर दे देबे लाख टंका सेकंड ईयर 10,000 देबे ता माने हमर सेडी 80,000 टंका रहिला बुझले ना सर यस ना बुझी गला हां हां को माने जदी से बड़ो करू हां से बड़ो करूची ताले से ए सेटअप मैम जदी कंपनी सेटअप टाइम से जो बड़ो करूची माने तो सेटन रे कोन आमे कैरी फॉरवर्ड करथले अमाउंट को तो से सेटअप टाइम रे कैरी फॉरवर्ड अमाउंट तो किछ रखि परिबोनी कैरी फॉरवर्ड सेटअप अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हैला सेटअप अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हैला 1 वर्ष रो लाख टंका से कैरी फॉरवर्ड हैला 2 वर्ष को 2 वर्ष रो पुणी 90,000 आनलो ता माने प्रथम वर्ष रो लाख टंका 2 वर्ष रो सेठी जति सेटन रे अलोकेबल सरप्लस होतला एटी लॉसेस लेखा हबो सेठी एटी लॉसेस लेखा हेगी लेखा हबो एई वर्ष रो एतिकी थर्ड वर्ष रो एतिकी फोर्थ सब एमती हे कैरी फॉरवर्ड हे जिवो माने कोन कहलो बरो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हे का जिवो बुझिलो ना बट सेटा प्रॉफिट हां एटा एडजस्टेबल तापे इंटरेस्ट कौन कहले कि किछि कहले कि रे पिला माने बुझी गलो ना ना कार किछि डाउट अछि कथा किछि हां झियो कौन कहू रे मां जण के किछि कहउतले कि सुबिधा अच्छा आओ तमे बुझी गलो तो यस मैम यस मैम ओके ओके पूरा क्लियर चलो सेटन सेट बुझी गलो पेरेंट बुक जीवो जाकी सेठी गुटे 10 वर्ष रा कैलकुलेशन देछि सेठी देखिबो हैला चलो दिस इज ऑल अबाउट योर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अच्छा लास्ट कथा कहूची मोइठी तुमको लास्ट कौन लास्ट ना इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इन केस ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन any things related to payment of bonus the dispute between employers and workers it is there in the organization धर डिस्प्यूट हमर ऑर्गेनाइजेशन रे एम्प्लॉयर वर्कर भीतर हैला कि तू काहे कि हमको देलुनु अलोकेबल सरप्लस हैला हमको 3 लाख तू काहे 20% देलुनु तू काहे हमें नबुनु हमें ये करबु से करबु जति भी किछि डिस्प्यूट हैला नाउ द वर्कर एंड एम्प्लॉयर द डिस्प्यूट इट कैन बी बेसिकली सेटल बाय द के डिस्प्यूट को सेटल करबो ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मु तुमको पढैली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रो जो लेबर कोर्ट अछि हैला लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मो कहितली लेबर कोर्ट किछिटा डिस्प्यूट सेटल करे जोटा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करेनी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किछिटा डिस्प्यूट सेटल करे जोटा लेबर कोर्ट करेनी
हैला सो एइदर जदी बोनस रा लेबर कोर्ट अंडर रे जिवो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर रे जिवो सो से अनुसार आमे केस टा फॉरवर्ड कर देबा एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू बोनस सो दिस केस इट मस्ट बी गो टू द लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सो बेसिंग ऑन दिस द dispute it can be solved जदी आम दुई जन के भितर सॉल्व हेई पाला नाही any type of dispute it is there in the organization then definitely the dispute it can be forwarded to the labor court and industrial tribunal under the industrial dispute act 1947 basing on this the government can solve this dispute. This is your last answer. Clear na? Yes na Yes, pila mane? yes, ma'am. Okay, 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 Yes, very madam. good. Okay, chalo we will discuss the next act. Wait a moment. ग्रेच्युटी पर डिस्कशन करी आगे से यूनिट रो आ गोटे इंपोर्टेंट एक्ट मु डिस्कशन करते कौन करते हैला now we will discuss the payment of wages act 1936 से यूनिट रो हैला जो यूनिट रे थर्ड यूनिट रे बोनस डिस्कशन करली बोनस एक्ट से यूनिट रो होची पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एटलीस्ट से यूनिट दुटा एक्ट फिनिश कर देबा इंपोर्टेंट एक्ट हैला the payment of wages act 1936 here we will discuss so many things related to the payment of wages act 1936 कौन आमे एठी डिस्कशन करबा ना फर्स्ट हैला द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द इंट्रोडक्शन कौन कहूची ना इंट्रोडक्शन हैला कि द in the payment of wages act 1936 it applied for every establishment सब establishment को एटा applicable हैला every establishment the payment of wages act 1936 एटा सब establishment पे applicable हैला so in every establishment को establishment पे applicable that I will discuss in this scope and coverage ठीक है so the act it applicable in every establishment the person who is getting up to 24,000 per month this payment of wages are applicable for that category of person mone rakhibo hela ei jo payment of wages act ta hela authority repeat kar debe ha authority repeat kar debe okay fine the payment of wages act 1936 this act it applicable for every establishment which establishment I will tell you right now every establishment in every establishment the person who is getting up to 24,000 per month 24,000 टंका जे पाउची आगुरे 24,000 टंका नथिला आइटा हमरो as for the standard of living जत्ता हाई हे का जाउची पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सत्ते अमेंडमेंट हे का जाउची हैला 1936 रो 1937 1940 51 57 64 70 71 76 79 82 एमिति हे ना 2017 रे आरो न्यू माने रिसेंट अमेंडमेंट हेची कोन ना हमरो जतिले स्टार्टिंग रे थिला 1600 टू एटा स्टार्ट हैला केते बेले ना जतिले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रे आस्तिला सेते बेले एटा एप्लीकेबल थिला एवरी एस्टैब्लिशमेंट पई इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट द वर्कर्स द एम्प्लॉय हु इज गेटिंग wages when एटा में worker को नबा हैला so wage कहला हमर worker so basically who is getting up to 1600 per month केते बेले 1936 रे एटा सेही लोकन को मानक पई एप्लीकेबल हेई थिला पास्ट रे हैला बट एटा अप टू डेट हे अमेंडमेंट हे का तापर हमर 6000 अब हमर 3500 हैला तापर हमर 6500 हैला तापर हमर 10000 हैला तापर हमर 18000 हैला एई ना 24,000 just माने 2017 रे amendment है the employee the worker or the labor who is getting
up to 24,000 per month, the employee is eligible the Payment of Wages Act 1936. এই Payment of Wages Act rules regulation ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହବ ହେଲା। So ଯାହା କଣ ଆ ଭିତରେ rules regulation ଅଛି I will discuss right now, ठीक है। So this is the introduction, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲା। Then ଚାଲନ୍ତୁ objective act ର କଣ ନା objective of the act ଦିଟା objective, most important objective ଆର ଦିଟା ଆସିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା to regulating the payment of wages, regulate କରିବା, regulating the payment of wages through we have to ପ୍ରଥମ ହେଲା regulate the payment of wages, first thing. Second thing ହେଲା to control the unauthorized fine and deduction. Unauthorized fine kono deduction kono एटा रहला main objective, सेटा मु discussion करिबी एई chapter रे मु ताकू ही discussion करिबी हैला। So objective कोन आसला, what are the objective of the act? The objective of the act is to regulate the wages, the payment of wages as per the legal means what, as per the legal factor. So we have to regulate the wage and we have to control the unauthorized fine and deduction. जहाँ सब ऑर्गेनाइजेशन अनऑथराइज्ड फाइन डिडक्शन अछि ताको कंट्रोल करिबा हला गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन ऑब्जेक्टिव। आको मन रखिबे दीटा ऑब्जेक्टिव को कोन कहले इन शॉर्ट ना रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड कंट्रोल द अनऑथराइज्ड फाइन एंड डिडक्शन, सेटा मु कहिबे इथिरे हैला। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कोठी कोठी एप्लीकेबल हैला। द एक्ट एक्सटेंड टू द एवरी एस्टैब्लिशमेंट केतेबेले at the year of 1936 the act extend to the every establishment. 1936 रे जेते आसिला the act extend to the whole of India. आमे एडी कहितले मो आमे जम्मू एंड कश्मीर को एना में इंक्लूड कर दबा त आमे कहिबानी एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। now the act extend to the whole of India, it applicable every establishment, every industrial establishment, it including किए ना इट इंक्लूडिंग आमे कहिले ना बेसिकली जदि आमे एटी मु कहि कहि का जिबी कोन ना एनी रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, any basically motor transport, air transport, any kind of basically what na plantation, factory, oil field, mines, apart from this any kind of manufacturing sector, any kind of basically construction sector, any kind of construction related to building, road, bridge, overally it extend to the whole of India. It applied every establishment where the workers are working either directly or through a contractor. Worker माने directly काम करथाई पारंतु के contractor through रो काम करथाई पारंतु। मु कहि देली establishment आगो applicability of the act ता माने whole of India को apply हैला 1936 रे and एइडा applicable हैला सबु establishment रे। सबुर लिस्ट गोटे लंबा चौड़ा लिस्ट दिछि तमरो बहि रे आ काहा को छाड़िनी ता माने एटा सबुडी applicable हैला। Clear? Government sector, central government as well as the state government, सबुडी हैला। So जदि भी गवर्नमेंट चाहिबो कोडी अप्लाई हेइनी, applicable हेइनी हैला, सेठी गवर्नमेंट चाहिले नोटिफाई करी गिरी सेठी मध्ये अप्लाई करी पारिबो। That is a power, it is there in the under the central and state government again. Clear? Now चलो कोन लेखिला definition, कहार definition ना definition of the wage। आमे एटी wage माने कहा को कहबा हैला। Now definition means how we can define as a wage. What is the meaning of wage? See, wage means introduction gala, object gala, applicability gala देइछि सबु, factory gala, mines gala, plantation gala, railway gala, ये gala, बो gala, सबु gala हैला गला। अच्छा wage काहू कहबा एटी देखिबो सुंदर भाबरे लेखिछि मु हैला। जहा कहूछि ताको मन रखिबो आ येलो कलर आगो भल से देखिबो हैला। कौन है wage means any remuneration, all remuneration, whether the way of salary, allowances or otherwise, it expressed in terms of money. एति की मन रखो आ एठी किछि मन रखिबा दरकार नै। एते बड डेफिनेशन हमरो मन रखिबा दरकार नै हैला। आमे एठी wage माने कोन कहबा as per the payment of wages act 1936, wage means all remuneration। एटा केमिति आसीबो remuneration टा, whether the way of salary हो, allowances हो or otherwise हो। otherwise रे हम जति किछ एक्स्ट्रा मध्य जति पाउचे, सैलरी आकार रे पाउचे, allowances आकार रे पाउचे। हां हां अरे म्यूट कर दियो,
हैला सैलरी आकार पाओ अलाउंसेस आकार पाओ और अदरवाइज अदर किछि बेनिफिट पाओ मोइना कहि भी अदर बेनिफिट आको कोन पाउचो इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी जोटा कि हम मनी को एक्सप्रेस करू थिबो सेटा को हमें वेज बोली कहिबा हैला अच्छा व्हाट इट इंक्लूडिंग कहा को हमें एटी वेज बोली कहिबा हमें एटी कहा को वेज बोली कहिबा नहीं व्हाट इट इंक्लूडिंग व्हाट इट एक्सक्लूडिंग इट इंक्लूडिंग any award settlement between the party any remuneration payable under any award settlement between the parties or order of the court आ माने कोन award माने मैडम कोन award माने हला कि धर एम्प्लॉयर गोटे डिस्प्यूट चलथिला पढै छि मु इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चलथिला लेबर कोर्ट कोन कला गोटे डिसीजन देला कहा फॉर रे ना इधर वर्कर फॉर रे हला एम्प्लॉयर अवार्ड माने हला डिसीजन मने रखिबो एठी अवार्ड मींस डिसीजन सेटा को हमर ये कोन कहला लॉ लैंग्वेज रा हम ताको अवार्ड कहूची बट अवार्ड मींस इट इज अ डिसीजन as per the order of the court if any remuneration getting by the worker that remuneration we can call as a wage clear प्रथम term condition चला second term condition को आस any remuneration it related to overtime कहिछि overtime more than आमे जदि 8 घंटा रो अधिक करबा आमे overtime 1 wages extra नबा ताको आमे वेज बोली कैलकुलेट करबा एनी हॉलिडे एंड लीव पीरियड हॉलिडे कोन संडे तुमको तमर ऑर्गेनाइजेशन तम पैसा काटुची संडे रे फर्स्ट डे पर हॉलिडे डिक्लेयर कला फैक्ट्री एक्ट रे पढिलो हैला से हॉलिडे अगरु तुमर पैसा काटनी देन इट इज अ हॉलिडे इन हॉलिडे व्हाट द अमाउंट यू आर गेटिंग दैट वी कैन कॉल्ड एज ए वेज एनी लीव पीरियड तमे कोन लीव नौचो सीएल नौचो कैजुअल लीव ऑन लीव सिक लीव सो मेनी काइंड्स ऑफ लीव इट इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर टेकिंग दैट लीव व्हाइल यू आर टेकिंग दैट लीव सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए वेज ताको मध्य हमें वेज बोली कहिबा क्लियर देन आस थर्ड कंडीशन को हैला थर्ड कंडीशन को होची कोन ना एनी बोनस और एनी अदर नेम मींस एनी एडिशनल रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर द कॉल्ड अ बोनस और एनी अदर नेम जो हमें बोनस टा को पाउचे से बोनस टा कोन ना बेसिकली जदी हमें एटी बोनस किछ गोटे पाइले देखो दीटा बोनस लिखा है कोन एटी गोटे बोनस इंक्लूड कोची गोटे बोनस एक्सक्लूड कोची काहे कि ना जो बोनस ता हमर प्रॉफिट शेयरिंग हेतिबो बुझिलो ना those bonus it related to profit sharing हेतिबो so say profit sharing bonus ता को हमें कोन करबा that is the basically हमर part of the wage हबो नाही जदी हमर एक्स्ट्रा किछि देला ऑर्गेनाइजेशन तो ताहा हेले हमर से बोनस ता को हमें एठी इंक्लूड करबा as a wage ठीक अछि तापर आसिला किछि आ छडा anything provided by the organization किछि जिंस गोटे organization provide करूची so सेठी जदी हमर से जिंसटा organization provide करूची apart from this as per the court of the law or as per the law or as per the decision of the court जदी एक्स्ट्रा किछि organization provide करची सेटा को हमें वेज बोली कहिबा ठीक है वेज काहा को कहबानी what is not is including means it is excluding ए लिखा है हैला कोन ना हमर एक्सक्लूड काहा को वेज करबा एक्सक्लूड काहा को करबा ना एनी हाउस अकोमोडेशन जदी हमर किछि हाउस अकोमोडेशन दोउची फॉर दी और दी सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस ए सब किछि जदी हमर फैसिलिटी हम कंपनी हमको प्रोवाइड करूची ताहाले हमको हमें ताकू as a monetary transaction then we cannot call as a wage. We cannot call as a wage any contribution paid by the employer at the time of pension, provident fund, gratuity and travelling allowances. सब को मुझे काउंट कर दिली पॉइंट नंबर 3 तमरो कहला कोन पेंशन प्रोविडेंट फंड वेज कहबा नाही ट्रैवलिंग अलाउंसेस टीए वेज कहबा नाही एनी ग्रेच्युटी वेज कहबा नाही एनी जदी डिफरे स्पेशल आउ किछि जदी डिफरे माने रिलेटेड टू तमरो एक्सपेंसेस किछि गोटे दोउची सेटा को मध्य हमें वेज कहबा नाही दिस इज वी कैन नॉट कॉल्ड अ वेज ताहले हमें वेज काहा को कहबा वेज हमें कहबा तो किछि हमरो सेटलमेंट हला बिटवीन द पार्टी और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑर्डर अनुसार लॉ अनुसार हमें किछि पाइले देन हमरो कोन हला हमें कोन अनुसार पाइले ना हमें पाइले एनी ओवर टाइम लीव हॉलिडे एंड द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जतले कहितली टर्मिनेशन जतले एम्प्लॉयर तुमको कर देबो हैला टर्मिनेशन जतले तुमको एम्प्लॉयर कर देबो सेतले तुम कोन करिवो ना 3 मास रा एडवांस सैलरी तुमको दबो व्हाइल द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड 3 मंथ्स एडवांस सैलरी और वेजेस दैट वी कैन कॉल्ड एज ए wage ठीक है wage what it including wage it what excluding now come to the point responsibility for payment of wages
ना रेस्पोंसिबल किए ना आमे जदि एठी कहबा सिंपल टर्म रे जदि आमे कोन एठी मुंडा मेथड नबा ऑब्वियसली आमे जते ऑर्गेनाइजेशन रे काम करूचे ऑर्गेनाइजेशन रो एम्प्लॉयर इज रेस्पोंसिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस मु जदि एम्प्लॉयर अंडर रे काम करचे मते एम्प्लॉयर देबो वेजेस एनी काइंड ऑफ जदि आमे फैक्ट्री जिबा फैक्ट्री रे से मैनेजर हो कि ऑक्युपायर हो जे हो हमकु से वेज दबो मैनेजर इज रेस्पोंसिबल फॉर से मैनेजर ऑक्युपायर भी पारे in the industrial establishment रे किए दबो ना industrial establishment रे a person basically responsible to the employer for जे हमर इंडस्ट्री को सुपरविजन करची से दबो और जदि हमें रेलवे रे जिबा जे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जे बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट रो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को बुझुतबो से दबा कोन मोदी आसी के थोड़ी ना दबो हैला So, ए सब कहूची आमे जदि सिंपल टर्म रे नबा who is responsible for payment of wages obviously I'm working in an establishment if it may be a railway or it may be a factory or it may be an industry or it may be a mines or it may be a plantation whatever may be the establishment so there the ultimate controller over the organization establishment it may be the manager it may be the occupier it may be the employer the person is responsible for the payment of wages clear बुझिगला now come to the point fixation of wage period कोन कहबा the fixation of wage period से सुंदर भाबरे सुनुतबो जोडी ना बुझिला संगे संगे अनम्यूट करी पचारतबो हैला fixation of wage कहूची ना the wage can be fixed हमें wage टा केमते फिक्स करबा ना the wage can be fixed daily basis weekly basis monthly basis 15-day basis but it should not exceed more than 1 month Hello? Clear? Wage period, when the organization will provide wage to the worker, that decided by the employer. Employer decide karibo, mu wage ta daily basis re settle karibi, weekly basis re settle karibi, 15-day wise settle karibi, or monthly wise settle karibi. But it should not exceed more than 1 month. Clear? Not exceed 1 month. Clear? That is a fixation of wage period. Now come to the point for section 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके अछि हैला now time of payment of wages कोन wage टा हमें को टाइम रे दबा now we will provide wages एटी सुंदर भाबरे सुनि we will provide wages the organization will provide wages if in a establishment less than 1000 workers are working or 1000 persons are working the wage should be settled within 7 days of the every wage period आ माने कोन मु कहूची हैला एति खाली मने रखो less than 1000 गोटे एस्टैब्लिशमेंट रे लोक काम करचंती वेज टा हमें 7 दिन भीतर सेटल करबा we have to settle the wage within 7 days in every wage period ठीक है ता माने हमें तो ऑपोजिट जिबा मोर अच्छा जदि लेस देन 1000 रे मैडम 7 दिन रे हमें वेज सेटल करबा ताले मोर देन 1000 रे हमें केते दिन रे वेज सेटल करबा if more than 1000 workers are working in a particular establishment then the wage should be settled within 10 days in every wage period आ माने कोन कहूची सुनिदियो सुंदर भाबरे बुझिबो धर हमर 1 मंथ तो अधिक होई परिबोनी वेज टा हमें दे परिबा नाही जहा सेटल करिया मास भीतर हमें वेज टा को सेटल करिया एंड डिसाइड बाय द एम्प्लॉयर मु कहली वेज फिक्सेशन अच्छा हमें डिसाइड करले कि हमें मंथली वाइज वेज दबा मु कहूची मंथली वाइज हमें वेज दबा हैला क्लियर 15 डेज भी हे परबो डेली भी हे परबो जहा भी हे पर मु जहा मंथली रे इंप्लीमेंट करबी एना तुम डेली रे भी सेटा को इंप्लीमेंट कर दबो 7 डेज रे भी कर दबो 15 डेज रे भी कर दबो सबडी सही रूल टा को सबडी इंप्लीमेंट कर दबो धर 30 दिन हैला हमें मु कहली ए मास 30 को आर मास 30 मु बेस देबी ठीक है फाइन दो किछि प्रॉब्लम नै जदी मो ऑर्गेनाइजेशन रे लेस देन 1000 वर्कर काम करूचंती 30 दिन परे 7 दिन मु हाथ रे टाइम नेली हैला कोन 7 दिन हाथ रे टाइम नेली 30 परे 1 2 3 4 5 6 7 एई 7 दिन भितरे विदिन 7 डेज एई 7 दिन भितरे मु तुमको वेज सेटल करबी अच्छा मैडम आपन तो कहले 30 दिन भितर वेज सेटल हो आपन 7 दिन काहे नेले हां मु सेट वेज सेटल 30 दिन ही करची 7 दिन मु काहे नेले ना 7 दिन मु एठी नेली धर लास्ट मोमेंट रे के लीव नेची के ओवर टाइम करिची 30 तारिख दिन ओवर टाइम हेची लीव नेचंती लोक हैला
30 तारिख दिन absenteeism अछि ए सब जो जिंस अछि मु केबे मु 30 तारिख दिन कैलकुलेट करती 30 तारिख दिन राति 2टा पर्यंत काम चलतिला ओवर टाइम रे काम करथिले लोक सकाळ पर्यंत मु कोन केमति ताको कैलकुलेट करबी मते तो पुनी टाइम दरकार ना 1000 लोक कैलकुलेट करिया पई केते दिन दरकार मु 7 दिन टाइम नेली ए 7 दिन भितरे मु तम बेस सेटल कर हला 10 दिन काहे की मोर देन 1000 1200 1500 2000 5000 लोक काम करचंती सेम थिंग्स तो मुते तो टाइम दरकार से मानकर कैलकुलेट करिया पई ओवर टाइम हो कि काम माने काम करथिलेनी जहा रिलेटेड एब्सेंटिज्म थिला लीव नै थिला जहा हितिला से सब मु कैलकुलेट करिवि सो सेटा मु कैलकुलेट करिया को दो एते वर्कर काम करचंती सो आई नीड 10 डेज सो 30 रु 1 रु 10 तारिख भितरे मु तुमको वेज प्रोवाइड करिवि 10 रु गोटे दिन भी अधिक हबो नाही 7 रु गोटे दिन भी अधिक हबो नाही ठीक अछि एठी टर्म कंडीशन कहूची जदी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो गोटे वर्कर टर्मिनेट हे गला हैला इफ द वर्कर terminated towards the organization and as well as the organization close their establishment the employer want to close their establishment now the employer have to settle the wage within 2 days of the date of termination or closing down the establishment जहा भी करिचो तमे क्लोजिंग डाउन एस्टैब्लिशमेंट करिचो कि एम्प्लॉय को टर्मिनेट करिचो तमे 2 दिन भितरे वेज सेटल करिवो इट इज कंपलसरी जदी तमरो ए 2 दिन भितरे वीकली हॉलिडे आसी गला संडे आसी गला ताहाले दैट इज एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग नै संडे रे कोन आसी त मु देकी जिबे ना कोन सैटरडे संडे जदी आसी गला ताहाले तुमे मंडे नबो संडे रे तुमको दिया जिवो नाही दैट इज नॉट द वर्किंग आवर और वर्किंग डे ऑफ ए एस्टैब्लिशमेंट गॉट इज इट क्लियर टू यू or have you any doubt yes na pila mane yes madam it's clear okay 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 chalo wage in case of termination of employment kahi deli now ha kuantu मैडम गोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो 1000 वर्कर रहउछन्ते तार लेस देन रहले तार मैक्सिमम टाइम टेबल डेट हैला 10th कौन कहले सर किछि सुभा गलानी गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जदि लेस देन 1000 लोक रहले तार 1000 एम्प्लॉय रहले हां देन ताको मैक्सिमम डेट जो लागु छै 10th मतलब 10 डेज एक्सटेंशन करछि से सैलरी पे ता पूर्व से दे करबो कि मिनिमम हां दे परिबे नहीं 7 डेज माने 7 डेज माने अपन 7 डेज नहीं देबेनी अपन गोटे दिन भी दे परिबे माने 7 डेज 1 रु 7 तारिख भितरे ता माने अपन 1 तारिख रे भी दे परिबे सेटा लेस देन 1000 रहले मोर देन 1000 हेले तो अपन 10 दिन एक्सटेंशन करे पड़छि लेस देन 1000 रहले 10 दिन एक्सटेंशन करे पड़े 7 दिन पा अच्छा ठीक है 7 डेज तो अपन 30 तारिख रे आपनकर वेज पीरियड सरी गला अपन 1 तारिख रे बहुत वेज सेटल करी दे परिबे 7 दिन आपनकर लेस देन 1000 वर्कर 7 डेज मोर देन 1000 वर्कर 10 डेज आपण 7 दिन माने 7 दिन रु गोटे दिन एक्स्ट्रा हबा को हबनी किंतु आपण 7 दिनटा आपण 1 तारिख रे मध्ये देई परिबे बुझिले ना सर ये जदी से ऑर्गेनाइजेशन एते के डेट भितर देई पानी ता पे किछि अछि कि जिंस ता पे पुनी अगेन लेबर कोड को जिवे आपण जदी आपण न देला थैंक यू जहा आपनकर प्रॉब्लम हैला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आगुरु मु फैक्ट्री इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट काई पढेले कहिले ए रिलेटेड फैक्ट्री रो आपण हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर जानि देले वर्किंग कंडीशन दा आ जति किछु डिस्प्यूट हैला आपण के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रो आपनकर रहि गेला किए कहिले आपनकर लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को केस फॉरवर्ड हिजबो डिस्प्यूट फॉरवर्ड हिजबो नाउ द गवर्नमेंट विल सेटल योर प्रॉब्लम हैला सर थैंक यू हेलो मैम ओके हां कोंतु मैम मु जाना में चाहूतले कि जोरा ए जो एक्ट है ओनली फॉर इंडस्ट्रियल बैंक ना एवरी ऑर्गेनाइजेशन बैंक वो है ना पूरा गाइली आपन का आगे रे कोन से क्वाड सुनथिले बा मु पूरा गाई गली आपन को स्कोप एंड कवरेज एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट रे सबु मु एडी इंक्लूड कर देली एवरी ऑर्गेनाइजेशन सब ए सुनंतु ता माने आपन एना पाउचंती मासु को 40000 मतलब आपन अछंती कोठी कहले माने एज ए एम्प्लॉय एज ए कोन कहले असिस्टेंट मैनेजर अछंती आपन कहबे मैडम एडा मो पे एप्लीकेबल होबे आपन पे एप्लीकेबल होबो कि सर only applicable those persons are getting less than 24000 per month मु आगुरु क्राइटेरिया सेट पे कहि दै छी नहीं मैम हां
ओ कहला कथा थिला कि सपोज गोटे एम्प्लॉय काम करछि 10000 पाउछि से इंडस्ट्री सेक्टर नाही जेमति कि सपोज हमर कॉल सेंटर रे रहउछि तो कॉल सेंटर पय कोन एम्ति एप्लीकेबल हे पाइयो पचार सेटा हम जाना से एडा कॉल सेंटर ना एडी लेखिनी एग्जैक्टली बुझिले सुनंतु आपण एटा ऑर्गेनाइजेशन सुनंतु एडी कोन करि जे आपनकर बुक्स कोन करछि गोटे लिस्ट दे देछि हैला मु कहि दोछि सुनंतु गोटे लिस्ट दे देछि को सेक्टर को एप्लीकेबल हबो जेमिति कि मु आपनको सेक्टर ना कहि दिली धरंतु ए ट्रांसपोर्ट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑयल फील्ड प्लांटेशन माइंस फैक्ट्री देन आसी गला आपनको रेलवे आपनको गला इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपनको प्रोडक्शन सेक्टर सब सेक्टर को गला कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रोड ये वो सब को देछि ना सब को देछि सप्लाई ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सब को देछि ता माने एटा कॉल सेंटर ता जोटा पर्टिकुलरली नाडा कहले कॉल सेंटर ता एटा जीवन नाही तो लिस्ट रे देइनी तो मु एटा को एमती मु कहि दिले कोन हे जी मु कहले एटा किछि होबनी किंतु एडी सेक्टर को मैम एजुकेशन सेक्टर ता एडी नाही नो अच्छा थैंक यू मैम this is not applicable for the educational institution ओके मैम ओके मैम हैला जवाब बाकी जदी गवर्नमेंट चाहिबो मु लास्ट आपन गोटे टर्म कहिली हैला धरंतु मोर किछि प्रॉब्लम हैला मु गवर्नमेंट को कोन कहली मो ग्रीवांस जणैली मु कहली मोर डिस्प्यूट सेटल करा जाऊ जदी एडी गवर्नमेंट चाहिबो इट इज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट notified by the central or state government they can apply this act for the particular establishment तांको हातरे ए पावर अछि ताहिले से माने इंक्लूड करि पारिबे बुझि गेले ना आगे मैम आगे ओके थैंक यू हां आउ के आ कोन के पचारतिले आपन कोन मु पढेबी माने बुझि पानी माने आपनकर 50 यूनिट ता पूरा भर्ती हेछि माने एते एक्ट अछि सेडी आ कोहंतनी चलो हां सैलरी डिले पे अपन जो कहले लेबर कोड पे किछ स्पेसिफिक सेक्शन अछि के हां लेबर कोड पर आपनकर स्पेसिफिक सेक्शन हला सेक्शन 7 एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रो लेबर कोड हला आपनकर सेक्शन 7 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हला 7A नेशनल ट्रिब्यूनल हला 7B पूरा सेक्शन अछि एक्ट अछि सब अछि सेतिर आपनकर सेठी के आपण रेफर करिवे सेठी आपण अछंती कंसुलेशन ऑफिसर अछंती आपनकर माने ये अछंती अपॉइंट करछि गवर्नमेंट आपनकर लेबर कोड रे ये अपॉइंट हेछि सब हम आपण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ता लोग नथिले कि सर चले सर मैडम एक्चुअली सेक्शन ता मानो पले हां सेक्शन 7A 7B हैला 7A हैला लेबर कोड हैला ओके चलो madam in case of termination as you told that within you have to settle down all the wages within 2 days within 2 days 2 days that depend upon the date of notice or date of relief डेट जते बेले जो दिन आपण नोटिस टर्मिनेट आपण को करा गला नोटिस नै जो दिन आपण ऑर्गेनाइजेशन रो डिटैच हेले हैला नोटिस तो आपण को मास देला कि 3 मास देला कि जहा देला हैला जो दिन आपण ऑर्गेनाइजेशन रे माने ये होचंती सो से 2 दिन भितर आपण को से टर्मिनेशन अमाउंट ता देई दबो हैला जो दिन आपनकर डिटैचमेंट होची ऑर्गेनाइजेशन wage should be paid within 2 days of the termination notice it बिल्कुल ना ही ना expiry of the wage period while the termination माने आपन को नोटिस तो बाडे से कोनी आपन जते टर्मिनेट ऑर्गेनाइजेशन रो हेले सेही 2 दिन भीतर आपन को वेज सेटल करबे नोटिस रो टोटली वर्ड ही ना बुझि गेले ना यस ना yes ओके चलो मु एना कोन कहू छी आगे भलो भाबरे सुनिबे सुनन आपन को तो टाइम हे गलानी खाली 5 मिनिट रो कहू छी कोन ना डिडक्शन मु कहितली आर ऑब्जेक्टिव कोन ना ऑथराइज्ड डिडक्शन in terms of authorized deduction to regulate the deduction unauthorized deduction or fine ना डिडक्शन फाइन को कंट्रोल करबा वाला पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव ए एक्ट एथि पई बोले ही जाउ किछि पई बोले ही हैला एठी हम जानिबा को चाहेबा ना मु आपन को कहबा को चाहूची ए जहां मु आपन को डिडक्शन ना कहबी हैला एठी देखंतु आपनकर बहुत सारा डिडक्शन अछि ऑथराइज्ड डिडक्शन रे डिडक्शन रे कोन अछि ना डिडक्शन फॉर फाइन डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन डिडक्शन फॉर सर्विस डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस लोन्स इनकम टैक्स प्रोविडेंट फंड ए सबु हैला ऑथराइज्ड डिडक्शन हैला ए जत्ती को एठी देछि आपनकर ए सबु हैला ऑथराइज्ड डिडक्शन ऑथराइज्ड माने कोन गवर्नमेंट को
माने स्टाम्प मारछि एटा ऑथराइज्ड आपण अनुसार डिडक्शन करि पारिबे नाउ मु एठी आपण गोटे एग्जांपल दोछि ना तापर आपण डिटेल टा बुझेबी डिडक्शन कोन फाइन कोन आपण जानि चंती व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय फाइन किए कहार किछि आइडिया रिलेटेड टू डिडक्शन एंड फाइन किछि यस और नो रे कहि दियंतु नो मैम कहि देले मु टाटा चेक कहि दे नो मैम नो वेरी गुड 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 यस यस कहिले पुलिस वाला जो चालान काटन सेटा होजी फाइन पुलिस वाला जो चालान काटती सेटा हला फाइन वेरी गुड आंसर वेरी गुड एग्जांपल हां आउ डिडक्शन कोन डिडक्शन मींस जो फंड आ जो पॉलिसी हम ईएमआई अकाउंट जो डिडक्ट हो सेटा होजी डिडक्शन एंड लोन एंड एडवांसेस एंड अच्छा अच्छा आपण एक एंगल रे कहले ओके वेरी गुड किंतु आपण को पुलिस फाइंड बड़ा एग्जांपल थिला अच्छा फाइन मींस इफ जदी किछि भूल करूचंती तो ता पई भी फाइन कटिवो जदी किछि माने एनी प्रॉब्लम पई आपण माने आइदर किछि एम्प्लॉयर किछि प्रॉब्लम अछि कि एनी ऑफ रीजन लाइक पैंडेमिक सेटा जदी किछि काटुची तो सेटा मत लागु सेटा डिडक्शन हबो हां वेरी गुड एक्सीलेंट आंसर मैम डिडक्शन ता हला कंपल्सरी बट फाइन ता हला फॉल्टी चार्जेस माने हमें नहीं परिबा नो भी नहीं परिबा ए कहउछन तो आज्ञा अच्छा वेरी गुड आउरी बढ़िया गुड अच्छा किंतु से जो आपण पुलिस जो नउची फाइन एग्जांपल देले बढ़िया एग्जांपल देचंती रियली अच्छा सुनंत आपण सब शर्त कहि देले आपनकर परसेप्शन अजम्पशन सरला मु एना कोन कहउची सुनन हला तापरे मु आपन को रूल्स रेगुलेशन कहबी डिडक्शन फाइन हला सुनंतु मु हेली गोटे लोक वर्कर एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आई डैमेज सम प्रॉपर्टी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है I damage some valuable property of the organization. Now the cost of the property it may be 10,000 or it may be 20,000 or it may be 40,000 or it may be 50,000 or it may be 1 lakh जा होजो हैला कंप्यूटर टा बाय मिस्टेक रे भांगी गला सेटा मिस्टेक रे जीवन तू भांगुचु माने तोर वेजेस रो डिडक्शन हबो हैला ए जे तू भांगिलु कि तार एक्चुअली वैल्यू केते सेटा तार वैल्यू होचे 50,000 now the value the actual amount is that a particular product it may be 50,000 that 50,000 it must be deducted towards your wages that is a deduction clear that is authorized hela now fine kono fine hela तू जब बापा भूलटा कलु जोटा तमे पूरा एग्जांपल फैंटास्टिक एग्जांपल देलो हेलमेट पिंदिलुनु हैला मास्क पिंदिलुनु सेथि पे मु तते फाइन पकेइली हैला सेटा सिना हम सही एंगल रे गले ए ऑर्गेनाइजेशन एंगल रे हम देखिबा तू जो ए जो प्रोडक्ट डैमेज कलु भांगिलु जोथि पाई बोली तते मु पनिशमेंट दबा पाई तते मु फाइन चार्ज कली ता माने कोन apart from the actual amount what the extra things that charged by the employer toward the worker that is called fine clear so fine kona deduction kona कहली मु what is that deduction what do you mean by deduction what do you mean by fine deduction माने हैला मु कोन कहली ना basically here see fine and deduction both are two different terms मने रखिबो when employee is damage some property valuable property of the organization now employer will recover that amount in terms of the wages of the worker that we can call as a deduction clear right now fine what do you mean by fine see other than that actual amount other than that loss amount other than that actual amount some extra amount that charged by the employer in additional amount or extra amount charged by the employer to the worker we can call as a what that is the fine काहे कि आउ ए भूल फर्दर करिवो नाही 1000 टंका दे जा मास्क पिंदिनी तो 1000 टंका दे फर्दर कोन दीटा मास्क कोन तीनटा मास्क पिंदी कि जीवो फर्दर कोन गोटे हेलमेट गोटे पिंदिबो आ गोटे साइड रे धरि गिरी जीवो 1000 दैछती आउ ए भूल न करिवा पाई बोली फाइन ता पकाइ दे बटा एग्जांपल दे हला ऑर्गेनाइजेशन रे कोन आउ ए भूल फर्दर करिवो सेति पे फाइन पकाइ दे त माने फाइन कोन मो मन इच्छा पकाइ दे 500 हला 1000 हला 5000 हला फाइन पकाइ देबे हेई परिवनी केते फाइन केमते डिडक्शन हबो केते डिडक्शन हबो केते फाइन पका जिवो
फाइन तमे केमती दबो डिडक्शन तमे केमती दबो दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास माने कोन सुनो हां मैम सुनंतु तमरो आपण मानकर हां को मा जियो को रे मा ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ମାନେ worker କିଛି ମାନେ company ର organization କିଛି valuable property ଯଦି କିଛି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ ତ ସେଇଟା ସେ employer ତାର bonus ରୁ ମାନେ କିଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ cut କରି ପାରିବ deduct କରି ପାରିବ କରିବ ଏଇଠି ତମର କେତେ होची फास्ट तुम बोनस तमरो बोनस अछि केबे दबाको कहला बोनस तमे दबाको अछि अक्टोबर मास रे तमे एइना अक्टोबर नै धर आरो वर्ष अक्टोबर रे दबो एइना तमे डैमेज करले म आरो वर्ष अक्टोबर पर्यंत तुमको वेट करबी जति तमरो सही टाइम रे बोनस पीरियड अछि आगे बोनस रु काटि तापरे तम सही पीरियड टाइम रे जति आ किछि दउछि आगे सही रु काटि तापरे तमरो वेज रु काटि धर जति तमरो से आरो वर्ष थिबो बोनस ता मु तुमको वर्ष जे वेट करी तमे से वेज दबोली ना एई परिवनी तार गोटे टेन्योर अछि एतिक भितर तमे सुजिबा पई कंपलसरी केते दिन भितर से सब टर्म कंडीशन मु तुमको कहबी कहली पा तापरे तमे क्वेश्चन ता पचारिबो जे मैम एटा हेई परिबो ना हेई परिबो हैला सुनो मा माने मो कथा सुनो यूनिट 1 सरची यूनिट 2 सरची यूनिट 3 रे चारटा एक्ट रु मु दीटा एक्ट फिनिश कली कोन पेमेंट आ बेजेस एक्ट बोनस एक्ट दीटा को इंपोर्टेंट एक्ट ता माने कोन जाउ दीटा इंपोर्टेंट ना इंपोर्टेंट कि स्टिल मु दीटा एक्ट फिनिश हेई पाला हैला फोर्थ यूनिट रो तमरो दीटा एक्ट फिनिश करची कोन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट दीटा बड़ एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट ता माने ना कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट इंपोर्टेंट नो चाउरी इंपोर्टेंट किंतु ए दीटा बड़ एक्ट इंपोर्टेंट एक्ट कंप्लीट करची हैला आउ रहिला तमरो 5 यूनिट रो 5टा एक्ट अछि जोटा कि ग्रेच्युटी एक्ट प्रोविडेंट फंड एक्ट ईएसआई एक्ट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दुईटा क्लास भीतर जेति की फिनिश हला मु सेति की करबी बाकी तुमे निजे पढ हैला मैडम आपण जो स्लाइड शेयर करथिले सेतिरे ओनली इन आईआर थिला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थिला डब्ल्यूपीएम इंट्रोडक्शन टू लेबर लॉस फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और सीबीटा थिला आउ एई एक्ट गुडा को स्लाइड्स आपण देई नहंती मैडम ना एई एक्ट को मु तुमको काली के दे दे हैला बाकी जति की फिनिश बाकी जति की माने रही गला धरो जहां एक्ट रही गला से आगो तमे निजे पढिबो मैडम एक्चुअली कोन की स्लाइड्स दे देले हां 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 स्लाइड्स दे देले हमको टिके सुविधा हबो हां 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 हैला तमे ताको देखि के ताको बाकी देखि सब निजे पढो हैला जहां रहला निजे पढिबो ओके 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 चलो थैंक यू बाय बाय थैंक यू मैम बाय बाय मैडम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थैंक यू मैडम इंपोर्टेंट एमईआर तो जति पढोची मु एमईआर रो मु जति पढोची सब आगे इंपोर्टेंट ही मु पढोची सेति पय गोटे देख समर यूनिट वाइज मु दीटा एक्ट कवर कर जाउची हैला तमरो यूनिट 2 रु दीटा यूनिट 3 रु दीटा यूनिट 4 रु दीटा मु दीटा ही कवर कर जाउची जो दीटा कवर कर जाउची से दीटा इंपोर्टेंट आको ही मु कवर करछ बुझी गला सेति की पढोची तमे सेति की पढी मैडम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण जति डाकिबे क्लास रे ताहले हमरो टाइम वेस्ट हो जिवो कारण दीटा क्लास अछि मु सेति आपण जो स्लाइड्स पठेबे रे जियो सुनो मु सेति पय कहूची जे एई एमईआरआरएल रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने हैला मु जो एक्ट पढूची सेई एक्ट हैला इंपोर्टेंट ता माने सेई एक्ट को तमे पढिबा को बाध्य हैला सेई एक्ट रु ही तमरो क्वेश्चन आसेबो हैला सेटा ही इंपोर्टेंट बाकी को छाड़ दबो हैला आ 5th यूनिट को पूरा कवर कर अच्छा ठीक अछि हैला यूनिट 1 रे तीनटा इंडस्ट्रियल रिलेशन सीबीडब्ल्यूपीएम इंडस्ट्रियल यूनिट 1 रे आईआर सीबीडब्ल्यूपीएम यूनिट 2 रे तमर रहला लेबर लेजिस्लेशन आ फैक्ट्री एक्ट सल्ला यूनिट 3 रे तमर कहली परा यूनिट 3 रे पेमेंट आ वेजेस पेमेंट आ बोनस यूनिट 4 रे तमर आसला कोन तमर आसला ट्रेड यूनियन आ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैला सेही इंपोर्टेंट आगो पूरा मु कवर करछि सेहीटा हैला इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला आ एना मु जदी करबी गोटे क्लास अननेसरी काई वेस्ट करियो सेही क्वेश्चन ही मु आपण मानको डाकि एइटा रे जेति को मु पढुछि दैट इज इंपोर्टेंट सेति के आपण पढिबे सेति के आपण मन रखिबे क्लियर ना यस मैम आज्ञा मैम ओके ओके मैडम ओके चलो ओके चलो थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच बाय बाय ओके बाय थैंक यू पड़े गला एंड कर दें